Hello students, this is Dr. Vibha Tiwari, Assistant Professor of English, Chaudhry Balluram Godara Government Girls College, Sri Ganganagar, and I am back with one more video on the poem The Tiger by William Blake. In my previous video, I had told you people that the poet is wondering what made God create the ferocious animal like tiger, and he had given a series of you can say things by which he has tried to give weightage to his argument. Now here again also he is continuing in the same way. Let's have the original lines first. When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? As I told you that the poet is wondering what propelled or what inspired God to create tiger. So he is asking the same thing here also. He says when the body of the tiger was made earlier in the previous video, I had told you that he's wondering what sort of instruments were used by God to create tiger. Now here he says when at the time of night, when the stars shine brightly and their light reaches the earth, it has been compared to that of spears because it is very bright, sharp. So the poet says when at the time of night, when the stars are shining brightly and their light is reaching earth, and at the time of night when dew drops also just fall on earth, which has been compared with the tears of heaven. He says that means at the time of night, when this animal comes out to prey, at that time the creativity of God is at full play. That means, see, we all are creations of God, and what we do is actually the you can say the work which was expected from us while making. When God was making us, the things that we are doing now is as if it was His wish. So when at the time of night, this animal, the tiger, starts hunting. The poet asks, did he smile his work to see? Then he's wondering whether God is happy to see the tiger, because I told you earlier also it's a predatory animal, and especially it is rather active at the time of night. It hunts at night. So he says when it is the time of night, when everywhere there is calm and peace, when the stars are shining brightly and the light is reaching earth, and the water of heaven, that means the dew drops are falling, at that time when it starts hunting, when the tiger starts hunting, did he smile his work to see? Then the poet wonders if if God is happy to see the workings of the tiger. Did he who made the lamb make thee? And when one looks at the qualities of tiger, which are totally in contrast with that of the lamb, as I told you in the very beginning of this poem, that the poet has written the poem The Lamb also, which is in sharp contrast to this poem. So here he is raising the same thing. He says, is it the same authority? That means, is it God Himself who has made both lamb and tiger? Because both the animals are totally opposite to one another as far as their qualities are concerned. On one hand, lamb is the symbol of innocence, purity, and on the other hand, tiger is the symbol of ferociousness, cruelty. So he is wondering whether it is the same God who has created both of them, and was he satisfied when he actually performed this task? So these are the things which are coming in the mind of the poet, because he is so much overwhelmed by the qualities of the tiger that he actually indirectly is highlighting them by saying so, as well as he is also highlighting the fact that God has the power of creating both
creative things and destructive things. That means both the positive and the negative powers, they go hand in hand on earth, and that's why this balance or equilibrium on earth is created. That is the basic motto of this poem, to highlight this fact. Let's proceed further. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? See, here again, the same lines have been repeated. The very first part of the poem has been repeated just to emphasize the fact that tiger, which burns bright, that means which shines brightly, its color is in sharp contrast to that of the darkness of night. So it appears very bright at the time of night. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. That means at the time of night, the body of the tiger burns brightly, shines brightly. So he keeps on wondering, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? What immortal hand or eye? That means only God has the power to look at it, or rather to create this. And he only has the power to look at his creativity without flinching. So he says, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? Who is there in this world who can look at you, or who can just handle you without being afraid? That means we all dare that day when we have to actually encounter and encounter a tiger. I think none of us is brave enough, let alone there are chances when we come face to face to such situation, we tend to just show some courage, but normally most of us will try to avoid such a situation. So he says, who is in this world who has the power to handle this fearful figure or this fearful animal? So, by repeating these lines, he is simply highlighting the fact that this creation of God is actually very, you can say, fearsome, and only God has the power to create such an animal. So, both the qualities of God, that means the positivity, that means creativity, and the destructive quality of God, have been highlighted in his creations by Blake. Especially here, he is highlighting the destructive quality of God, who has, you can say, propelled him to create this animal called tiger. So let's have the whole thing in Hindi. When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोएट जो है पूरी कविता में इसी बात को लेकर हैरान है कि क्या कि कौन सी वो ताकत है जिसने टाइगर जैसे खतरनाक या खौफनाक जानवर का निर्माण किया है। और यहाँ ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी कि ब्लेक की ही कविता है द लैम्ब, जिसमें उन्होंने गॉड की प्योरिटी या इनोसेंस को क्रिएट करने की ताकत का जिक्र किया है लैम्ब के माध्यम से। और यहाँ उसके बिल्कुल उलट, बिल्कुल विपरीत, उन्होंने गॉड की खौफनाक या ख़तरनाक क्वालिटीज़ वाले चीज़ों को क्रिएट करने की ताकत का एक तरह से उल्लेख किया है। तो पोएट कह रहे हैं कि रात के वक्त जब तारे अपने स्पीयर्स की तरह, भाले की तरह नुकीली किरणों को, यानी तीखी किरणों को धरती पर छोड़ते हैं, एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और रात के वक्त जब ओस की बूंदें आसमान से नीचे गिरती हैं, जिनको कि उसने हेवन के टीयर्स यानी स्वर्ग के आंसू से कंपेयर किया है, कि रात के वक्त जब तारों की चमक भाले की नोक की तरह धरती पर चमकती हुई पहुंचती है, और जब ओस की बूंदें जो कि स्वर्ग के आंसू सी धरती पर आती हुई सी लगती हैं, डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी। तो ऐसे समय में जब टाइगर रात को बाहर निकलता है, तो क्या डिड ही स्माइल, क्या वो मुस्कुराया था, यानी ईश्वर, क्या ईश्वर मुस्कुराए थे हिज वर्क टू सी, अपने काम को देखकर। यानी जैसा कि उसने शुरू में ही उल्लेख किया कि भाई
टाइगर जो है वो रात के वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है, और रात का वक्त वैसे आम तौर पर देखा जाए तो हम इंसानों के लिए शांति का समय होता है, विश्राम का, आराम का समय होता है, और उसके उलट टाइगर के लिए ये एक्टिविटी का समय होता है, हंटिंग का समय होता है, शिकार का समय होता है। तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त जब तारे आसमान की अपनी रोशनी धरती पर छोड़ रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं, और जब कि स्वर्ग से आंसू के रूप में ड्यू ड्रॉप्स टपक रही होती हैं, उसकी बूंदें टपक रही होती हैं, ऐसे में जब टाइगर शिकार के लिए निकलता है तो क्या वो ईश्वर अपने इस काम को देखकर मुस्कुराया था? डिड ही हु मेड द लैम मेक दी? और बार बार उसे आश्चर्य हो रहा है इस बात पर कि क्या जिसने लैम्ब को बनाया, जिसने मेमने को, जिसने प्योरिटी को, इनोसेंस के प्रतीक मेमने को बनाया, क्या उसी ने इस खौफनाक जानवर को, जो कि कह सकते हैं क्रुएलिटी का, निर्दयता का प्रतीक है, क्या उसको भी ईश्वर ने ही बनाया है? देखिए, यहाँ ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम हमेशा से ही सुनते पढ़ते आ रहे हैं कि गॉड में ही दोनों क्वालिटीज़ को बैलेंस करने की और दोनों क्वालिटीज़ को बनाने की ताकत है। यानी वही है जो वही ईश्वर हैं जो पवित्रता की और मासूमियत की, कोमलता के निर्माण करता है। वही ईश्वर खौफनाक ताकतों के भी, या जिनको कहेंगे हिंसक ताकतों के भी निर्माता हैं। तो एक तरफ तो उनका संरक्षात्मक हमको रुख देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ उनका संहारक रूप हमें देखने को मिलता है, और ये दोनों ही क्वालिटीज़ ईश्वर में पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पोइट जो है इनडायरेक्टली उन दोनों क्वालिटीज़ को सामने लाने की कोशिश कर रहा है। उनकी जो कविता है लैम्ब, वो तो ईश्वर की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता की क्वालिटी को सामने ला रही है, और उनकी ये जो कविता है द टाइगर, ये उनकी संहार शक्ति को सामने ला रही है। तो बार बार पोइट को आश्चर्य हो रहा है कि क्या जिसने लैम्ब को बनाया, क्या उसी ने इस खतरनाक जानवर को, टाइगर को भी बनाया? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइगर, टाइगर burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? वापस से लाइंस को रिपीट किया गया है, सिर्फ एक शब्द का अंतर है, कुड की जगह डेयर है, बाकी वापस वही लाइंस फर्स्ट पार्ट की रिपीट की गई हैं। और रिपीटेशन हमेशा ध्यान रखिएगा किया जाता है किसी भी चीज़ को एक तरह से दबाव देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, वजनदार बनाने के लिए तर्क को, चीज़ को रिपीट किया जाता है। तो वापस पोइट वही कह रहा है कि टाइगर जो है, जिसका रंग चमकता हुआ सा लगता है रात से घिरे हुए जंगल में, ऐसी दुनिया में कौन से हाथ और आँख, यानी दुनिया में ऐसा कौन है जिसकी हिम्मत हो तुम्हारे इस खौफनाक शरीर को का मुकाबला करने की, या सामना करने की, या देखने की, या निर्माण करने की। यानी पूरी दुनिया में अगर हम कहें तो ईश्वर प्रदत्त या ईश्वर निर्मित जितनी भी रचनाएं हैं, उनमें से शायद किसी में भी ये ताकत नहीं होगी कि वो टाइगर का सामना करे। देखिए, जानबूझकर कोई भी इस तरह के हिंसक जंतु के सामने या खौफनाक चीज़ के सामने आना नहीं चाहेगा। वो अलग बात है, गाहे बगाहे कभी मुलाकात हो जाए तो आप साहस का प्रदर्शन करें, पर अगर आपको बाय चॉइस कहा जाए तो आप में से ज़्यादातर लोग इस सिचुएशन से भागने की कोशिश करेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। कोई भी जानबूझकर टाइगर से मुकाबला नहीं करना चाहेगा। तो उसी चीज़ को पोएट ने हाईलाइट किया है कि टाइगर जिसका शरीर चमकता हुआ सा लगता है रात के अंधेरे के कंट्रास्ट में, विपरीत में, उस खतरनाक जानवर को भला दुनिया में कौन है जो हिम्मत कर सके सामना करने की। तो ये आपकी पोएम थी द टाइगर। इसका मूल उद्देश्य ईश्वर की संहारक ताकत को सामने, यानी उनकी जो संहार करने की ताकत है उसका गुणगान करने की, उसका बखान करने की एक तरह से कोशिश की गई है इन लाइंस में, इस कविता के माध्यम से। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही कह सकते हैं एक बहुत सिंपल माध्यम से पोइट ने ईश्वर की उस ताकत को हमारे सामने बयान किया है।
तो मेरा ख्याल है आप लोगों को ये कविता अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। आज के लिए इतना ही।